Um, Closure practice question. So you have a relation such that for all A there exists B such that A or B is there or B or A is there. Is it true or false? The transitive closure of the symmetric closure is also reflexive. Let's check that. Okay. So here's the definition of the relation. Okay. And here is what we want to find out. Okay. Bring out your papers and see how this thing is. So what you want to do is you want to construct this thing and figure out whether this thing is always reflexive or not. Okay. Done? People who are done. Okay, 1, 2, 3, 4. Iman, are we done? You have no idea where to go? Dekho, the way you prove this thing is, where is my thing? Let me actually write down the whole proof, okay? Just to be giving examples there, or BA is there, right? Hena? Okay, this is by definition. By definition of R. जैसे यहाँ पे define हुआ है, okay? For all AB again, sorry, what? Okay, cool. Okay. Let me fix this. For A. Okay. Good. Okay. So for arbitrary A, we need to show. What do we need to show? We need to show that A comma A is in the transitive closure of the symmetric closure of R. है ना? This is what we need to show. Okay? This is our final thing जो हमने finally show करनी. Okay? So let's start with the definition. It says that there exists B such that
A comma B is in the R, or B comma A is there, right? All right, are we good? Okay, so if, so यहाँ पे आपके पास दो केस हैं, okay? If A comma B is in R, it implies that B comma A must be in the symmetric closure of R, है ना? And if B comma A is in R, then A comma B must be in symmetric relation of R. Okay, this is definition of symmetric closure. Okay, so from 2 we know that both AB and BA are in the symmetric closure of R. ठीक है? Are we good? कोई complaints यहाँ पे? No? Okay, cool. So the next step is that AA is क्या? AA, yeah, okay, this is what I want to. AA is in the transitive closure of symmetric closure of R by 3 and definition of transitive closure. Okay, so transitive closure के लिए you need this the set the relation T of S of R to be transitive. Okay, अब T of S of R के अंदर अगर A B है और B A B है तो you must have an A. Okay, and that's it. That's QED. Okay, so that's how I want you guys to write a proof of this kind. ठीक है क्या? BB भी होना चाहिए. I don't care BB. मेरा गोल सिर्फ ये था कि मैंने A शो करना. Okay, I wanted to show it for an arbitrary A. मैंने एक arbitrary A पकड़ा और उसके लिए मैंने शो करना. BB भी definitely होगा. Okay, but मेरा proof यहाँ पे complete हो गया. Are we good? Remember the definition. हमने ये prove करना है. Again, I think I lost my marker. The statement says that for all, oh boy, did I? So the statement जो मैंने prove करनी है वो essentially ये है कि for all A in the set A, A should be in the transitive closure of symmetric closure of R. है ना? Sorry, what? No. So this is my goal. वो तो मेरी premise है ना? ये premise है. ये वाला जो red वाला part है ना, वो ये है. ये मेरा goal है जो मैंने prove करना है. Okay? ये जो blue वाला part है ना, this is my hypothesis, and this red part is my conclusion. है ना? कि if this holds, then this is true. This is what I'm trying to prove. Okay? So इसका जो translation है वो ये है, और इसकी जो translation है वो ये है. Okay? Question? Okay. Okay, while some A or B, A B belongs to R. That either such that either A or B or B or Yes? हाँ, इसको मैंने ऐसे लिखा है. क्या? So this is by premise. This is by premise. This is basically my premise. Okay. So this is what we did ना. यहाँ पे जो हमने white board पे किया ये सारा काम हमने यही किया. What's going on? Why did it stop? Okay. So हमने basically we started with जो हमें पता था. हमें ये पता था कि either A B is there or B A is there. Okay. फिर हमने इसका symmetric closure बनाना है.
ओके इसका जो सिमेट्रिक क्लोजर होगा उसके अंदर अगर ए बी था पहले से तो हमें बी ए ऐड करना पड़ेगा। ओके अगर बी ए था तो हमें ए बी ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स कि इसके सिमेट्रिक क्लोजर में ए बी भी होगा और बी ए भी होगा। ओके सो दिस इज़ वेयर वी वर यहाँ पे। ओके अब जो कुछ बचा है उसका हमने ट्रांसिटिव क्लोजर लेना है। ओके अब इफ़ यू हैव अ रिलेशन जिसके अंदर ए बी है और बी ए है, उसके ट्रांसिटिव क्लोजर में यू मस्ट हैव एन ए, है ना। सो यू व्हाट यू स्टार्टेड विद एन ए। ओके अगर आप सो देखें आपने बेसिकली एक आर्बिट्रेरी ए के लिए करना पड़ेगा आपको। ओके यहाँ पे बी आर्बिट्रेरी नहीं है, बी इज़ सम बी, वी डोंट नो व्हाट दैट बी इज़, बट ए आर्बिट्रेरी था। ओके अगर बी बी के लिए आप ज़रूर लिख सकते हैं लेकिन वो प्रूफ नहीं करेगा इसको। मेक सेंस? गुड। क्या सेकंड वाला? ओके सो सेकंड वाले स्टेप में हमने सिमेट्रिक क्लोजर की डेफिनेशन यूज़ की है। ओके सो हमने ये कहा है कि मेरे पास दो केसेस थे। एक केस ये है कि आई हैव अ ए बी इन माई रिलेशन, इफ़ आई हैव एन ए बी देन आई मस्ट हैव अ बी ए इन माई क्लोजर। ओके इफ़ आई हैव अ बी ए देन आई मस्ट हैव एन ए बी इन द क्लोजर। Okay, so in both cases I must have both of them in my symmetric closure. So now what I'm saying is that आपके पास दो, आपकी जो premise है ना वो ये कहती है कि for every A there exists someone so that you have an arrow like this or you have an arrow like I'm not sure this is going to work, but either you have an arrow like this or you have an arrow like this. Okay, this is the definition or this is the premise. Okay, अब इसका जब आप symmetric closure लेंगे तो अगर ये blue वाला edge था आपके पास तो आपको फिर ये वाला blue edge ऐड करना पड़ेगा। Okay, अगर आपके पास red edge पहले से था तो आपको red edge ये वाला ऐड करना पड़ेगा। Okay, in either case either you will have the two blue edges or you will have the two red edges. Okay, तो ये दोनों एज आपके पास होंगे सिमेट्रिक क्लोजर में। अब जो चीज़ आपके पास बन गई है इसका आपने रिफ्लेक्सिव क्लोजर ट्रांसिटिव क्लोजर लेना है। ओके ट्रांसिटिव क्लोजर के लिए इफ़ यू हैव एन ए बी यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड यू कैन कम बैक फ्रॉम बी टू ए, देन यू मस्ट हैव दिस लूप। सो वी आर डन। ओके let me see if there are any interesting examples. Yeah, this is the complete proof. I actually have the proof on the slides as well.